तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यार the cell क्या कर रहा है ना, in a cell culture technique cells are removed from an organ and animals and plants are growing subsequently in the favorable environmental condition. So पहले क्या करना, we are make to the culture media. Three types of the culture media are there. So three types of the culture media में any type of the culture media making कर रहे. So making करना के बाद क्या करना ना, selected organism body such as animal or plant, एनी बॉडी में क्या करना, सेल रिमूवल कर रहे हैं. वो सेल रिमूवल करने के लिए थोड़ा टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो करो, नहीं तो नहीं है. सो सेल रिमूवल करने के लिए मैं भी क्या करना, डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो क्या करना मैकेनिकल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्या करना एंजाइमेटिक, दैट इज ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो वाला यूज़ करके क्या करना है, वो सेल रिमूव कर रहे हैं. सो रिमूव करके कहाँ पर रखा दूंगा, सो सेल रिमूव करके एनवायरमेंटल में रखना चाहिए. सो की एनवायरमेंट में रखना चाहिए ना हम लोगों में. सो कल्चर मीडिया एनवायरमेंट में रख दूंगा. रखने के बाद कल्चर मीडिया में ये क्या क्या है यहाँ पर कल्चर मीडिया में, सो सभी क्या करना हार्मोन्स और एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स सभी है यहाँ पर. सो इसलिए क्या करना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता. आप लोग वो सोचिए फर्स्ट वन एनिमल सेल कल्चर में रिमूव करने के लिए. सो नेक्स्ट वन देखो प्रोसेस ऑफ द सेल कल्चर, वो प्रोसेस करना चाहिए. सो क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग हम देखिए. सो फर्स्ट वन क्या करना, प्रोसेस टू द सेल कल्चर. फर्स्ट वन हार्वेस्ट सेल्स. सो हार्वेस्ट मतलब कटिंग ऑफ द सेल्स. सो कटिंग करना चाहिए एक सेल, फर्स्ट रिमूवल करना चाहिए. सो करने के बाद क्या करना ना, आइसोलेट द सेल विथ द यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंजाइम्स. सो वो सेल क्या करना, क्लीन करना चाहिए. सो बिकॉज क्या करना, हार्वेस्ट करना के बाद सेल रिमूव करना के बाद वो सेल में कोई ऑर्गेनिजम्स जर्म्स सो अदरवाइज द पार्टिकल्स है तो क्या करना, वो वाला रिमूव करने के लिए सम ऑफ द एंजाइम्स यूज़ करना चाहिए. यूज़ करने के बाद क्या करना, अप्लाई द आइसोलेटेड सेल्स ऑन एन एप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडिया इन ए कल्चर डिश. सो कल्चर मीडिया में बाद में क्या करना, वो डिश में रखा देंगे. सो वो डिश में रखा देंगे तो क्या करना, नेक्स्ट वन क्या कर रहा है ना, कल्चर सेल. सो नेक्स्ट वन क्या करना ना, कल्चर सेल बाय द प्लेसिंग द कल्चर डिश इन ये सेल इंक्यूबेट करना चाहिए. सो क्या कर रहा है ना, वो कल्चर सेल क्या करना, कल्चर कर रहा है यहाँ पर. सो कल्चर करने के बाद क्या करना, उसका सेल इंक्यूबेट करना चाहिए. इंक्यूबेट करने के लिए क्या करना, 120 डिग्री से यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट वन क्या करना ना, सब कल्चर सेल्स इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना, सब कल्चर सेल्स आर देयर to obtain to the pure culture or by the pass to the some of the problems such as a senses cells वो यूज करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन क्या करना ना, वेरीफाई द कल्चर सेल्स और ऑफ द सेल टाइप्स इन इंट्रैक्ट. सो ये इंटरेस्ट करना चाहिए वो सेल्स. सो नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट देखिए. लास्ट वन पॉइंट में आप लोग हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, लास्ट वन पॉइंट में द सेल्स आर रेडी बाय द मैनिपुलेटिंग द मॉडिफिकेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट प्रोसेस. सो बाद में क्या कर रहे हैं ना, वो सेल्स मैनिपुलेट करने के बाद क्या करना, एक्सपेरिमेंट को यूज़ करिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन प्रोसेस है. एंड नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ द एनिमल सेल्स में वो टाइप्स देखिए. So based on the number of the cell divisions, the number of the cell divisions, cell culture can be classified three types. So first one two types यहाँ पर दे दिया. First one primary cell culture, and next one क्या करना, cell lines. So cell lines can be undergoes to the either finite or infinite cell division. This is classified to the cell lines. वो बाद में बोल दूंगा. So next one देखिए, जिसका बाद my dear students. So first one animal cell culture classified on a primary cell culture. So depend upon their origin. So विच पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड एनिमल आप लोग वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसका बारे में डिपेंड अपॉन करिए. सो प्राइमरी सेल ग्रो either as an ancient